हाय गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? इस बार आवाज आ रही है ना? वी आर एट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस नीट वाला जर्नी. Why am I sounding so formal? You have been here for a long time with me. खैर, yeah, questions. That's the focus of आज का सेशन. Questions, questions, questions. Just like yesterday, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन के, आज भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे. And थर्सडे को भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे. In these 3 days, try and cover जितना भी सिलेबस है. Of course, the goal is to give you relevant questions और कुछ PYQs and have some fun along the way. Right? ठीक है, शुरू करें. How you doing? Hey, शिवम, स्निग्धा, तीर्थराज. Hi, good evening. आवाज आ रही है, right? You're able to hear me and see me clearly? बढ़िया. Let's go. Let's get started. All right. पहला सवाल is going to be from organic chemistry. In this reaction, yeah, good evening, VSKG. In this reaction, the electrophile involved is what? You've got something here. ये कहाँ से, किस चैप्टर से है ये? Okay, you've got a phenol, but बन रहा है aldehyde. So aldehydes, ketones, acidic and acids, right? Okay, cool. Maybe it's from that chapter. But ये हम लोग बहुत बार आपके साथ कर भी चुके हैं. Directly NCERT से है. इसमें पूछा ये जा रहा है कि it's talking about electrophile. Intermediate की बात नहीं करना, because अगर intermediate पूछते तो एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता था. Electrophile क्या है? Something that lights electrons. So it must be a positively charged thing. Oh, maybe शायद हो सकता है, हो शायद ना हो. Oh wow, we've got a lot of क्या बोलते हैं, enthusiastic students today. गुंजन जी, okay, हाजी, yeah, स्निग्धा, सीमा, good evening. Hey, पीयूष, बिल्कुल सही. तीर्थराज, बिल्कुल सही. Great. Alcohol phenols. आई पीयूष, alcohol phenol में आई है? I thought this was from aldehydes ketones. Anyway, जिस भी चैप्टर में, it's not that important, right? What happens in this reaction? इस रिएक्शन में होता क्या है? You get CHCl3, it reacts with NaOH, and it gives you CCl3 minus Na plus. Okay, hey, hold on, that's interesting. मतलब यहाँ पे CCl3 minus था. All right, sure, CCl3 minus था, but ये एक unstable species है, ठीक है? CCl3, let me write on the other side ताकि CO साफ साफ दिखे. This is not that stable. Okay, there's negative charge of carbon, etc., etc. So it's, this guy like, what? I'm just going to go here, I'm going to break away. Once it does that, you get Cl minus, and hey, that is pretty stable. These guys stick around solution में, and what you get here is CCl2. ये क्या हो रहा है भाई? CCl2, this is called a carbene, and this is what attacks this spot right here. Ortho, para, etc., etc. ठीक है? Hold on, other way around, right? Other way around. ये electron deficient species है. Electrophile मतलब something that likes electrons. Okay, great. So यहाँ के this bond is going to break and this is going to go there, and since I've got this in NaOH, इसलिए ये भाई साहब निकल जाते हैं and you get Na plus. That's it. So the species that actually gets attacked is CCl2 with a couple of electrons. ये electron deficient species है. Okay, although it doesn't have this plus thing. Look at that. It only has 2 bonds, right? So it is a 6 electron species. इसको electrons चाहिए, बहुत जरूरत है electrons की, इसलिए वो reaction होता है. Perfect. Let's go on to the next question. Very easy question. Lovely. Benzyl chloride is intermediate. All right, बढ़िया. Okay, I have no idea what that is, but good job, Shivam. Vacant की वजह से electrophile है. Yes, exactly. Unhybridized orbital जिसमें electrons हैं. Great. Alkyl benzene is not prepared by Friedel-Crafts alkylation of benzene. Ooh, okay. Assertion. Reason: alkyl halides are less reactive than acyl halides. Okay, what do you think about this one? Carbene. Yes, Singh, बिल्कुल सही. What is this? What is happening here? सवाल आपने पहले लाइफ में देखा है क्या? See, alkyl halides are X. ठीक है, R बार छोड़ो. Let's write it as maybe C. Let's write it as CH2X. Let's do that. कुछ है. This is alkyl halide. Acyl halide COCl and something else over here. Okay, इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? Because इसमें से और यहाँ पे ऑक्सीजन भाई साहब बैठे हुए हैं, and you've got this as well. So the delta positive here is going to be a lot more than the delta positive over here. Okay, so इसीलिए acyl halide is more reactive. तो reason तो सही है. Okay, reason सही है, तो we can eliminate C and B. अब ये देखना है कि assertion भी सही. देखो, because reason सही है, it looks like it is obvious. Okay, by the way, देखो, look at this question. Even if you're not sure about the assertion, ठीक है? In this question, if I say that the reason is correct, then ये option गया and ये भी option गया. मतलब कि दोनों assertion और reason definitely correct हैं. Just by this, I don't have to worry about
वो बोल कर रीजनिंग सही है कि नहीं, रीजनिंग तो सही नहीं है यार, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस, या लेस रिएक्टिव है कि नहीं है, दैट हैज नथिंग टू डू विद अल्काइल बेंजीन नॉट प्रिपेयर्ड बाय फील्डक्राफ्ट। अल्काइल बेंजीन इसलिए बनता है क्योंकि भाई साहब इतने इट फॉर्म्स अ पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, राइट? या सो होल्ड ऑन, यू गाइस सेइंग डी, बी, आई फील इट्स बी, या दोनों सही हैं, बट रीजनिंग हैज नथिंग टू डू विद असर्शन। या रीजनिंग मैंने आपको बताया डिटेल में क्यों है, बिकॉज देयर टू electronegative species are attached to carbon, so this makes it more electropositive. Okay, it should be B, it should be B. Yeah, assertion तो गलत है, but कैसे गलत क्यों होगा? Why? Why Piyush? Why is the assertion wrong? Look at the options. Okay, we can explain why it's wrong, but look at the options. Options देखते हुए it is not possible for assertion to be wrong. ठीक है? Because reason is correct. Look at the options. You want to talk about it? क्यों? What is wrong with this? What is wrong with the assertion? Piyush, बताइए. According to you, we can spend some time on this. It's okay. Sir, लेकिन toluene तो बन सकता है. You don't get alkyl benzene. Okay? वो फिर से substitute हो जाता है. Poly substitute हो जाता है. And isomeric change भी हो सकता है. Okay. Okay. Think about it like this. ये option छोड़ दो. This option is wrong. Okay. This is गलती से. I'll fix that. I just need some space to write. Okay. So if I try and add, say, CH3, CH2, CH3, or let's do this, let's do CH2Cl. If I try and add that to benzene, and I do, what do you call it, AlCl3, right? This is not going to work out because rearrangement हो जाएगा. This is why you use acyl chloride to do this. ये सब आप लोग जानते हो, right? Yeah, that's it. It's not always prepared. Toluene बन सकता है कि नहीं, वो substitute भी हो सकता है. ठीक है यार, these are some, I thought that these are things that are very straightforward. इस theory के अगर आपको बात करनी है, then let's chat over here, okay? But this, according to me, is like stuff that's in NCERT. तो इस theory के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे. But if I do this, it's going to rearrange. It's not going to do that. It's going to get this. It's going to form this compound. Okay? It's not going to form propyl benzene or phenyl propane, whatever you want to call it. Right? It's going to form this compound. Okay? And let's go on to the next one. एक और organic का सवाल. In the given transformation, which of the following is most appropriate reagent? मैं organic से इसलिए शुरू कर रहा हूँ because last time मेरे से जब आपसे बात हुई, आप लग रहा था कि आपको organic ज़्यादा आसान लगता है. So I thought I'll start with some organic, then we'll do some physical questions. Yeah. All right. Cool. Thanks for those inputs. In the given transformation, which of the following is the most appropriate reagent? यहाँ पे क्या हो रहा है? Looks like ये group reduce हो रहा है. That's it. Okay. Alcohol भी है. Oh, there's a OH group. So reducing agent यहाँ पे मुझे दो दिख रहे हैं that are strong enough. Both of these are strong enough. This is not strong enough. And Na liquid NH3. What's going to happen to Na liquid NH3? Any ideas? So how do you decide, by the way? Okay, looks like no one wants to listen. You guys are like A and D के बीच में you already selected D. Why not A? What's the problem with A? एक वुल्फ किश्नर है, दूसरा क्या बोलते हैं उसको? What is the zinc HCl thing? उसको क्या बोलते हैं? Is it Rosenmund? What? No, it's called something else. Rosenmund कुछ और होता है. What is the first one called? Yeah, D. Ashik is saying A. Yeah, why not A? Why D? Why not A? Clemenson? Sure. Clemenson is something that अगर acidic है कोई चीज, उसके साथ आप acid डालोगे तो it can mess around with this. Okay? Yeah, Wolf Kirchner is better because it does not get. Yeah, no, सही है. D was right. Don't change your answer. D बिल्कुल सही था. Yeah, this is going to mess around with this. You got an alcohol group and you got to add an acid there. It's not good. All right. You want to only reduce this. You don't want to mess around with this at all. D is the right answer. Good job. Let's go on to the next one. Yeah, sure, Piyush. Thank you for that input. Good job. Snigdha, ध्यान से, D is the answer for this one. Yeah, Clemenson is the right name, but Wolf Kirchner is what's going on over here. Okay, NH2OH. NH2 and OH minus. Okay. Next, the pKb of diethylamine and pKa of acetic acid are some values. The correct option for the pH of diethylammonium acetate solution is what? It's all right. Don't worry about it. ध्यान से करने वाला सवाल था. It's okay. Don't worry about it. Good evening, Sultana. How are you doing? Answer क्या होगा इसका? ये वाला भी आसान है. बताओ पीयूष. Go ahead. pKb दिया dimethylamine का and pKa acetic acid. ऐसे क्वेश्चन में चक्कर ये होता है कि you're like, भाई, I know the formula I know it is weak acid और weak base है, और ये NCERT में भी दिया हुआ है 7 plus. Now what is this? Half है. Now what is this? This is pKa या pKb? pK what minus pK what? कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है? How do you remember?
ओके शिवम, ऑलराइट, सही कर गलत कर दिया, हाँ होता है तीसरा ध्यान से करने वाली चीज है। यार सुल्ताना, कैन यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? व्हिच वन इज इट? पीके प्लस माइनस पीके और पीके माइनस पीके कौन सा होता है? एनसीईआरटी देखना मत, चीटिंग मत करना। टेल मी, ए और सी। यही तो सिंगदा, वही तो चक्कर है, ए या सी, यही तो बताओ। इज इट ए और इज इट सी? इट इज नॉट दीज टू। ठीक है, गुड। हाँ ओके पीयूष, व्हाई इज इट पीके माइनस पीकेबी? व्हाट्स द लॉजिक? पीके माइनस पीकेबी क्यों है? लॉजिक क्या है इसके बारे में? ओके, इट इज नॉट ए और सी, इट इज ईदर ए, आई एम सॉरी, इट इज नॉट, क्या बोलते हैं, ओके कूल, ठीक है देखते हैं ए और सी। ओके, हाउ इज इट ए और सी? ओके, सो 4.77 माइनस 3.27 कितना होगा बाई 2? हाउ मच इज दिस? 1.5 बाई 2, मतलब कि 0.75। ओके, सो आई एम ईदर एडिंग 0.75 और मैं 0.75 घटा रहा हूं, सो इट्स ईदर 6.25 और 7.75। इट इज नॉट बी और सी, है ना? थैंक यू स्निग्धा। थोड़ा सा ध्यान रखो, एसिडिक बफर नहीं है, इट्स एसिडिक सॉल्ट शिवम, नॉट एसिडिक बफर। बफर नहीं है शिवम, शब्द आप, मैं आपकी भावना समझ रहा हूं। इट इज एन एसिडिक सॉल्ट। ओके, पीकेए जो हम लोग यूज करते हैं, यू रिमेंबर, इट इज अ सॉल्ट, इट इज नॉट एन एसिड। बफर थोड़ी ना बन रहा है भाई, ये तो सॉल्ट बन रहा है। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है, यहां पे दोनों चीजों का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ओके, सो लेट अस चेंज स्लाइटली व्हाट शिवम सेड, ही इज ऑन द राइट ट्रैक एंड दिस इज द राइट फॉर्मूला। व्हाई इज द फॉर्मूला? बिकॉज पीकेए से पीएच बढ़ेगा, पीकेबी से पीएच घटेगा। थिंक ऑफ दिस लाइक दिस, इफ यू हैव CH3CONa, राइट, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, मतलब this is going to have what do you call it, greater than 7 pH, right? और इसका देखो, this is weak base and strong acid, मतलब this is going to be less than 7 pH। ऐसे याद रखना होता है, this is the logic, hence there will be a negative pKb and plus pKa। this is how you remember the formula। फॉर्मूला कभी कभी मग करना हेल्पफुल होता है, बट उसके पीछे लॉजिक याद रखना और भी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, cool, hence the answer has to be D। All right, not A, yeah, anonymous, I get it, it's okay, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। yeah, in fact actually ये 7 भी टोटली है ना, it's 14 प्लस पूरी कहानी ये है, it is POH प्लस PKA माइनस PKB whole thing by 2। POH नहीं, ये क्या लिख दिया, PH2, oh my god, PKW, इसीलिए यहां पे 14/2 होता है, which is 7। All right, this is the whole deal। All right, great, good job that you follow the formula, but formula के पीछे logic लगाना जरूरी है, because see, a lot of your friends did not get this right, and see this is from NEET, ये NEET 2021 का सवाल है, because ये NCERT में डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है, but फॉर्मूला कितने याद करोगे, you need to know the logic behind it। All right, for the given reaction CO plus H2O, you get CO2 plus H2 at a given temperature, the equilibrium amount of CO2 can be increased by what? What is the equilibrium amount of CO2? उसको कैसे बढ़ाया जाए, घटाया जाए, कैसे करें? How do we do this? पीके का वैल्यू पीके वाले ले लिया मैंने, इट्स ओके पीयूष, ऑलराइट, ओके, यस हरजोत जरूर आए थे, इजी था, ऑलराइट, कूल, दैट्स गुड। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? दिस इज वन स्मॉल थिंग इसमें देखने के लिए, बाकी उसके बाद बहुत जल्दी हो जाएगा। एक छोटी चीज है, कीप इन माइंड, बहुत एक छोटी चीज। Thank you, Snigdha. That's exactly the amount of time you need to spend on this question. No more than 15-20 seconds. What's the one thing you need to realize? कि देखो, delta Ng is 2 minus 2 यानी कि 0। Be careful, यहाँ पे H2O भी गैस दिया हुआ है। कभी कभी जल्दी में आपको लगेगा कि यार H2O तो लिक्विड होना चाहिए, है ना? And then you will mess up the whole question. So be careful about this. Be careful about this. ठीक है? क्योंकि if that would be the case, then maybe this also could be the answer. Maybe. Yeah? खैर, delta Ng is 0, hence सब हट गए, and this is a simple Chirality principle, you add a product, reaction go forward, खत्म। yeah, all right, good job on figuring it out। Piyush Burger, welcome। Amit Pal ji, and sorry, Amrit Pal ji and Teethrajan Pampa, long time bro, good to see you। all right, next question। P block के बारे में कोई बात कर रहा था, P block का सवाल आ गया। Noble gases are named because of their inertness towards reactivity। Identify an incorrect statement about them। Identify an incorrect statement about noble gases। They have a large positive value of electron gain enthalpy। Noble gases are sparingly soluble in water। Okay. Noble gases have a very high melting and boiling points। They have weak dispersion forces। Dispersion
लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं, राइट? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस, बेसिकली अगर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, नहीं एक्चुअली नीदर, कुछ नहीं, देयर आर नो डाइपोल्स, ओके, जस्ट डिस्पर्शन, लंडन फोर्सेस ही बोला, डिस्पर्शन फोर्सेस, कोई डाइपोल है ही नहीं, हीलियम इज लाइक जस्ट व्हाट इज इट गोइंग टू डू, इट्स जस्ट अ नोबल गैस सिटिंग अराउंड, सही है, ये वाला भी सही लग रहा है. अब बिटवीन दीस टू यू गॉट टू फिगर आउट व्हिच इज द राइट आंसर. दिस मेक्स सेंस, ओके. Why would it have a large positive electron gain enthalpy? Large positive, see, a negative electron gain enthalpy means कि it's great, it likes accepting electrons. A positive value means कि नहीं, उसको electron नहीं चाहिए भाई, it's done, it does not want electrons. A large positive मतलब बिल्कुल भी नहीं चाहिए. This also seems right. Hence, this is the incorrect statement. They don't have high melting and boiling points. Gas होता है, noble gas होता है, right? अगर gas नहीं होता ना, yeah, it is C, guys. Guys, what are you guys doing? अरे क्या चल रहा है? What? Okay. Hold the phone for a second. Bro. Why? Why is it A? No, you don't have that. I don't think so. 100,000% sure. Titraj, by the way, it doesn't make sense to talk about 10,000% because that literally means कि 10,000 over 100 times. So you can't technically go over 100% sure. Sorry. I had to do that. But उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि यार you have to figure out the incorrect statement. A तो सही है ना? Guys, okay, it seems like कुछ अंग्रेजी में आप लोग को मुश्किल हो रही है. So I will just open up. Why not A? Think, सोचो. क्यों? What is wrong with A? Why is A incorrect? Please बताओ मुझे. Okay, let me counter question you. Why is A incorrect? You are saying it is incorrect. Can you give me the logic as to why it is incorrect? Can you give me that logic? Please दीजिए logic. Electron gain enthalpy. हाँ, NCERT खोल के बैठना पड़ेगा लग रहा है. Where is electron gain enthalpy? NCERT. Guys, I'm not doing this. हाँ तो पॉजिटिव ही तो होना चाहिए. पॉजिटिव ही होता है. बुक पढ़ लो यार. Come on, don't make me do this. Are you really going to make me at this point जब नीट 5 दिन में है, पीरियोडिक टेबल खोल के आपको मैं दिखाऊं कि भाई क्यों इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है? Guys, ठीक है. What the things we do? Okay, ठीक है, we will do it. Because सब लोग बोल रहे हो तो there is some disconnect between the अंग्रेजी on this question and the understanding that we have of this. Okay. चलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लो दोस्तों, भाइयों और बहनों, देख लो भाई. रुको, where is my screen? Brave, no, we need to go Edge, Microsoft Edge. देखिए देवी और सज्जनों, here you go, on top of my head, right here. और प्रूफ चाहिए आपको? मैं क्या बोलूंगा? मैं आपको अंग्रेजी में बता चुका हूं, हिंदी में भी बता चुका हूं, अब ग्राफ ही देख लो. ठीक है, हाँ ठीक है, let's move on. Yeah, please don't make me do this again. I don't know what to say here, guys. Please, man. ध्यान से करो. Don't get overexcited. Next question. A gas is allowed to expand in a well-insulated container against a constant external pressure of 2.5 atmosphere from an initial volume of 2.5 liter to a final volume of 4.5 liter. The change in internal energy delta U of the gas in joules will be what? Okay, this is a direct question. Thermodynamics से. The only thing you got to do is convert liter atmosphere to joule because सारे answers joule में दिए. That's it. Bro, what are you guys still on about? सवाल पढ़ लो यार, सर मत खाओ मेरा. ठीक है, एग्जैक्टली, ये इज करेक्ट. या ए ऋषभ, हरे कृष्णा, आप यहां क्या कर रहे हैं? वेलकम दो, वेलकम, कभी भी आइए. You this one you think is A Sultana? All right, let's see. Rishabh, we are doing an advanced session at 8:30 p.m. if you're interested, if you want to check that out. Okay, this one is A. How do you do this? यार पिछले क्वेश्चन तुम लोग पढ़ने का ध्यान दो, okay? And this is not me pulling your leg or anything. This is really important. If you feel that last question में इतनी जल्दी में आपने गड़बड़ी कर दी, मतलब you have to read questions carefully. That is the moral of the story. Okay? It is not about your preparedness. आप लोग पढ़ाई कर चुके हो, you know everything. But you have to read questions carefully. It asks for the incorrect statement. Okay? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो. Well, let's do this question. How do we do this? Delta U is Q plus W. Work is P delta V with a negative sign. Okay? So you have everything given to you. इसका आंसर बताइए. Yeah, 1 liter is 101 joules. All right.
All right, sure, sure, sure. All right, do your thing. Yeah, Titraj, of course. That's the most, that's like the सबसे जरूरी चीज नीट में. You have 45 questions in an hour. You have to read those questions carefully. और उस क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं होता है कि एक लाइन का क्वेश्चन होता है. सीटी जैसा नहीं है कि क्वेश्चन छोटा सा पढ़ लो तुरंत हो गया. You know need more than better than I do, right? You've prepared for it so hard. So please, at the last leg, जो सबसे जरूरी चीज है, be calm during the exam और ध्यान से पेपर पढ़ो. Okay. Anyway, this answer is straightforward. इसमें ज़्यादा effort लगाने की ज़रूरत नहीं है. Pressure is 2.5 atmosphere. Final VF minus VI is 4.5 minus 2.5 minus 5 liter atmosphere मिलता है. 505 हो जाता है, which is the first one. All right, let's go to the next one. What is the major final product Z in this reaction? You've got, what is this? A methyl cyclopentane, one methyl nomenclature. I'm bad at it. फिर you do Br2H nu. Br2H nu light के presence में. And then alcoholic KOH. Oh, okay. Then you get some other major product. And then you do HBr and peroxide. एक बात बताओ, जब bromine water और जब bromine not bromine sorry bromine and light के साथ होता है, मतलब you get a free radical, right? Maybe. So free radical and maybe what happens also is you get this free radical. Maybe. So maybe you get this product. फिर alcoholic KOH के साथ, अरे मैं क्यों सॉल्व करूँ, तुम लोग सॉल्व करो. अमृतपाल ये वाला डी लग रहा है. ओके कूल. नहीं, पीयूष सुल्ताना सेइंग सी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फ्री रेडिकल के साथ बन गया ये. ओके. देन अल्कोहलिक के साथ बन गया ये. ओके. इज दिस करेक्ट? इज दिस द राइट डायरेक्शन? दिस सीम्स वियर्ड. दिस डजंट सीम राइट, डज इट? अगर ये होता है, अगर ये होता है, देन तो यू विल गेट दिस एज द प्रोडक्ट. दाल में कुछ काला है. नहीं, इधर नहीं होगा. CH2Br होगा, नॉट दिस. CH2Br. Okay, if I do this, this seems weird, doesn't it? If I do this and I get a double bond over here, then I will get Br यहाँ पे, which looks like D. Is it C or is it D? क्या गड़बड़ की हम लोगों ने यहाँ पे? हरजोत जी, I feel you're stuck on something. If you want to just chat, please ping me here. We're not going to do that on this. I'm going to teach, continue teaching, and if you want to chat about general stuff, please ping me here on Discord or on Telegram. We'll chat there. ब्रोमीन में 3 कार्बन में जाएगा. टर्शरी कार्बोकैटायन. बट व्हाई डज द टर्शरी कार्बोकैटायन गो देयर? आई मीन यहां पे इट्स अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, नो? एग्जैक्टली तीर्थराज, बहुत ज्यादा आ रहे हैं. तो इस लॉजिक में क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस लॉजिक? यहां Br2H nu मतलब फ्री रेडिकल बन रहा है, तो फ्री रेडिकल यहां पे आ रहा है. व्हाई वुड इट गो हियर? HBr peroxide. नहीं, लास्ट वाला स्टेप इज फाइन. HBr peroxide is okay, anti-Markovnikov, that is fine. बगर जी, that is fine. मैं पहले स्टेप की बात कर रहा हूं. फर्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट. लास्ट स्टेप बिल्कुल सही आपने बोला कि देयर आर 2 ways to this. Okay, एक जो मैंने अपने मन से कुछ किया था. The other way which seems more likely is this, right? कि यहां पे ब्रोमीन बन जाए and then डबल बॉन्ड यहां बने, right? And then less substituted carbon पे, which is this, यहां पे ब्रोमीन बने. Maybe this is the answer. But what's the problem with this? पेरोक्साइड बोला है ना. पेरोक्साइड मतलब कि लेस सब्स्टिट्यूटेड, या एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी MKV, मार्कोवनिकॉफ, है ना? ठीक है. तो दिस लुक्स लाइक इज द आंसर. यू गाइस आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स. व्हाई नॉट दिस? व्हाई नॉट डी? गिव मी द लॉजिक देयर. डी क्यों नहीं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है. फ्री रेडिकल मतलब यहां पर फ्री रेडिकल गया, यहां पे भी गया, तो व्हाई डज दिस नॉट रिएक्ट? हाँ, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहां करेगा. हाउ डू यू गेट अ टर्शरी फ्री रेडिकल? सिंका रिंग एक्सपेंशन होगा. इंटरेस्टिंग. रिंग एक्सपेंशन होगा. रिंग एक्सपेंशन क्यों होगा? Why will there be a ring expansion? Give me a logic here. It's okay we spend a little bit more time on one of these questions क्योंकि hey, maybe you've seen this a lot of times, but let's be sure about it. Let's be absolutely sure about this. ठीक है? क्योंकि this is NEET, right? NEET is coming up in a few days' time. Doubt नहीं होना चाहिए. It's important. Yeah, I feel it's important. So, what do we do? बताइए. Waiting on input, friends. That's fun. Ortho or para? What? Ortho or para? More stable. But
3 डिग्री आया कहां से? फ्री रेडिकल में 3 डिग्री का क्या मतलब हुआ? 3 डिग्री इज कार्बोकैटायन, राइट? फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। निगम, वेलकम मेरे भाई। सो फ्री रेडिकल में भी रीअरेंजमेंट होता है, इज इट? अच्छा, दिस इज न्यू एंड इंटरेस्टिंग। सो फ्री रेडिकल में भी रीअरेंजमेंट होता है, ओके, जैसा आप बोले। यू आर कन्विंस्ड, राइट? इफ यू गाइस आर कन्विंस्ड, यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट. If anyone is not convinced, so I'm just making sure that hyperconjugation. All right, beautiful, beautiful. Hyperconjugation. No rearrangement in plus. Okay. ठीक है. मैं इतना सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ just to make sure that you are convinced of what you guys are doing. Okay. अगर आप लोग convinced हो, then we don't have to talk about this. ठीक है. Answer is C. Cool. आगे बढ़ते हैं. Good job on this then. Cool. An alkene on ozonolysis gives methanol as one of the products. The structure of the alkene is what? Methanol. Methanol, 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 methanol. Free radical, free radical, free radical. Okay. How do we do this? Simple सा question है. NEET 2020 का, very doable. Ozonolysis is one of those things that I remembered without reading anything. Like, hey, I know what happens in ozonolysis. ये मुझे याद है. So what do you do here? क्या लगता है आपको? Snigdha, बढ़िया. Very quick answer. I like it. I like it. Why would it be that? Everybody's on this thing. Beautiful. Beautiful. Okay, cool. So, why is it B? Because what happens in ozonolysis? You get this sort of a thing, right? Double bond breaks into this. You get like this whole thing, right? Just like a cage-like structure is formed and it breaks, etc., etc. Cool. So, यहाँ पे सिर्फ this is going to give you methanol. This is going to give you ethanol, ethanol, whatever you want to call it. These are just weird, right? This is going to break up. Anyway, let's not look at that. B is the only one that can give you methanol. All right, formaldehyde. I like that name as well. Next question. The weight of iodine required to oxidize 500 ml of one normal Na2S2O3 is what? कौन सा रटा हुआ है सुल्ताना? समझा नहीं सुल्ताना. Which one are you talking about? Oh, रटा हुआ है मतलब see this one right here. See, okay, you want to talk about this? So do you know the mechanism of ozonolysis? Are you familiar with that? It's from the cage-like structure. Look, the mechanism से ज़्यादा ज़रूरी है. At the end, what happens is कि दो double bond बन जाते हैं oxygen के साथ. Okay. You get like an Ozinide or whatever you want to call it बीच में. Right. Let me get some space to draw. Okay. So I have C double bond C, and then what happens is that you get this awesome peach wala product, which then leads to this. यही मैंने शॉर्ट में लिखा था सुल्ताना आपके लिए. This is what I wrote in short as this. Okay, this is the final thing you get. Let's make it proper. Let's make it complete by adding the other line diagram things. ठीक है? तो इधर what will happen is this bond will break. You will get. Am I drawing this correct? Yeah. Okay. Perfect. And this and this and this and then this goes away and you get blah 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 blah. 6-membered ring. This. Okay. This aldehyde and another aldehyde which is HCHO. Hence that's the answer. I hope that helps. ठीक है. What is the weight of iodine required to oxidize 500 ml of one normal Na2S2O3? Sultana, you good? इसके बारे में बताइए please. Everybody else here. Double bond तोड़ो, oxygen जोड़ो. Sound like an election slogan. हमारा नेता कैसा हो, ozonolysis जैसा हो. What's up, chromosomes? How do you do this one? Weight of iodine required to oxidize 500 ml of one normal Na2S2O3. बताइए. Can we do this? It's called oxidative cleavage if you want to look it up online. सुल्ताना, और पढ़ना है तो oxidative cleavage बुलाते हैं उसको, ठीक है? All right. Great. How do we do this? वो कैसे करें बताइए? Can you guys help me with the process on this one? Practical chemistry question. हाँ, you can call it practical chemistry. You need a little bit of normality on this one. Although normality NCERT में है ही नहीं, but equivalent है तो you have to know what normality is. You must know. Good job on figuring it out. Naruto, C or B? पक्का करो. That's the confusion, Naruto जी, है ना?
ध्यान से करिए। Yes, Piyush. The gram equivalents of all reactant substances in a reactants product should be the same. What is the gram equivalent? It's the mass that interacts with 1 mole of electrons. So it doesn't matter. Balancing is not important. Without balancing, you can say closer and say, okay, if some amount of this, how much is 500 milliequivalent? Why 500 milliequivalent? 500 ml or 1 normal. Matlab 500 milliequivalent of iodine is required because 500 milliequivalent of thiosulfate hypo is used. So 500 milliequivalent iodine क्या होगा? What is iodine? Iodine is a gas. Alright, it's diatomic. I know solid होता है whatever, बस diatomic है. ठीक है? अब क्या करें? अब क्या करें? What is next? You forgot iodine mass. Iodine का mass is 127 gram per mole. Atomic mass. Atomic molar mass of iodine. Gram atomic mass. GAM. 127 ग्राम पर मोल. आयोडीन टू आयोडेट. नहीं यार, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट मत करो पीयूष मेरे भाई. लगता है फिर से एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी. हाइपो आयोडीन. क्लॉक रिएक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्लॉक रिएक्शन पढ़ा है? कहां गया ये? एज. चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे क्लॉक रिएक्शन को. I don't know, I'm talking like I swear I'm not imitating anybody. I just like doing drama, as you guys know. Clock. देखो वो सब हो चुका है. Don't get confused, okay? आयोडेट वाला कहानी खत्म. आयोडेट इनिशियली रिएक्ट करता है इसके साथ SO3 साथ टू गिव यू दिस. ये फ्री आयोडीन जो निकलता है, दिस फ्री आयोडीन देन कहां गया यार? सल्फेट, थायोसल्फेट कहां गया? ओके, ब्रिलियंट. इट्स नॉट देयर इन दिस. क्राई. या इट्स नॉट हियर. क्लॉक रिएक्शन का नेक्स्ट वाला स्टेप, या दिस स्टेप्स नॉट क्लॉक रिएक्शन. ऑल द ड्रामा गोज टू वेस्ट. रुको, इट्स देयर समवेयर एल्स. नॉट क्लॉक रिएक्शन. लेट्स जस्ट कॉल इट yeah, I forgot as well. See, good. Moral of story, read NCERT. Clock reaction does not have hypo in it. मुझे लगा था इसमें hypo है, but इसमें hypo नहीं है. हाँ, है ना, देखो है तो. Yeah. NCERT is never wrong. I can be wrong. NCERT is never wrong. Look at this. Clock reaction. देखिए दोस्तों, you heard it first on Aakash BYJU'S NEET channel. I2 plus S2O3 gives you this. This is the whole reaction. ठीक है? पेरोक्साइड में ठीक है यार, डजंट मैटर. पेरोक्साइड में किसी भी चीज में है, डजंट मैटर. बट द पॉइंट इज दैट आयोडीन I2 विल बिकम I-. आयोडेट कहीं नहीं है. ठीक है? देयर इज नो आयोडेट. यार मेरा नाम बड़ा लिखा तो है यार इसमें. आशीष शेखर इज माय नेम टू. बट नेम, सवाल सॉल्व करो, आंसर बताओ तुम लोग. ऑलराइट. क्रोमोसोम टाइम पास करना है यहाँ पे. ठीक है, कूल. 500 मिली इक्विवेलेंट. आयोडीन गिव्स 2I-. ओके, एन फैक्टर है इसका 2. ऑब्वियस बट स्टिल गॉट पॉइंट आउट. ओके, 0.5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन मतलब क्या? 127 ग्राम into 2. Why? Because I2 divided by n factor which is 2. Be like, what are you doing, bro? Doing things properly, first principle से. उसके बाद 0.5. Okay, cool. So this now is gram equivalent mass times number of equivalents. Hi, what is gram equivalent mass? It is the mass per equivalent of anything. Okay, so equivalent cancel हो गया, mass बचा. That's what you want. See, I proved to you from a little bit of mathematical jugglery, which is nothing. मैंने कुछ नहीं किया. ठीक है, जस्ट ध्यान से करने वाली चीज ताकि आपका आंसर गलत ना हो. क्योंकि शुरुआत में कुछ लोग बी बोल रहे थे, कुछ लोग सी बोल रहे थे. आंसर is 63.5, not 127. See, please don't get confused. Don't mark 127 randomly. Okay? Yeah. All right. Great. Let's go on. Good job. आसान सवाल. The stability of +1 oxidation state among aluminium, gallium, indium, and thallium increases in the sequence. Which sequence does it increase in? बताइए. +1 oxidation state.
+1. ये सब let's just open P table. Aren't all of these in the same group? They are in the same group. Absolutely. Same group में है. तो क्या हुआ? Same group में है तो क्या हुआ? Inert pair effect. Inert pair effect हमको ध्यान में रखना पड़ेगा. Here you go. Whoa, colorful table, huh? Look at this. Aluminium, gallium. अरे मेरे सर के पीछे चला गया. And now it's on here, right here. It's a little small, but ठीक है, you'll manage. Aluminium, gallium, indium, and thallium. Now these guys, both of these guys. Here, नीचे जो है, both of these, +1 is more stable than +3. Why? Why? Inert pair effect. Similarly, PB के लिए 4+ is not that stable. 2+ is more stable. Okay. Now, between indium and thallium, sure, thallium में +1 is more stable than indium. Similarly, between SN and PB में 2+ is more stable than 4+. इस पे आप बहुत सवाल पूछ सकते हो inert pair effect पे. You can ask, talk about oxidizing agent, reducing agent, सब कहानी, but everything is related to this. All right, cool. Let's go back to this. All right, you got the answer now. D block में उल्टा है. Okay. Welcome Devika Chakrabarti ji, Assam, beautiful state. Direct NCERT, exactly. So the answer होना चाहिए A for apple. B for ball. The decreasing order of bond angles is another easy question. ये तो सवाल काफी आसान आ रहे हैं. Yeah, I have mixed things. Yeah, कुछ questions physical chemistry में थोड़ा effort लग रहा है, कुछ organic में थोड़ा effort लग रहा है, and then inorganic, which is like you see the answer, you mark it. Just like bio में आपको question दिखता है, आप तुरंत आंसर बताते हो. inorganic में वही करना पड़ेगा. दिगंबर जी, D या A? Make up your mind, bro. ये क्या है? 180 degrees. BeCl2. Hence the answer is either A or B and not C or D. Okay. Now NO2 और SO2 के बीच में क्या करेंगे? NO2 is sp2 and SO2 is sp3. So 109.25 I want to say. याद नहीं आ रहा है. Something 24 whatever. And 180 degrees. I know it's not this. थोड़ा कम होगा because lone pair etc जो भी है. Lone pair की वजह से थोड़ा कम हो जाएगा. I don't want it to be like 119 degrees, 118 degrees कुछ तो होगा. खैर, anyway, doesn't matter. Yeah, this is the order. Option A is the right answer. Let's go. 134. बाप रे, पीयूष पेज नंबर बता रहे हैं. सही है bro. Sultana, it will be A, not D. Be careful. Pithraj, Piyush, Burger ji, and what was your name? Sorry, Devika. Good job, Devika, Sultana, everybody else here. SO2 sp2 है. एक minute, let me think. Yes, you are absolutely right. SO2 is going to be मैंने बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स में बना दिया. Yeah, you are absolutely right. It is SO2 is going to be sp2. Then how do we decide between NO2 and SO2? How do we decide between NO2 and SO2? This makes it interesting, doesn't it? Yeah, thanks for that. Thanks for figuring that out. SO2 is going to have 6 electrons. NO2 is going to have 5 electrons. So एक ही electron यहाँ पे. Okay, cool. Or does it have 2 electrons? And one of this is like a coordinate bond. Yeah. 134 bond angle. Oh, 134. NO2 is 134. Okay. This is 119, I think. Yeah. This is 134. That's interesting. NCERT. So yeah, there you go. Hence A is the answer. Sorry about this weird diagram that I made. That would be for XeO2, not SO2. Which of the following is in incorrect statement? 2022 का सवाल. More bond pairs. Oh yeah, more bond pairs. Sure, brother. More bond pairs. More bond pairs actually shouldn't be more lone pairs. Brother, अगर ज़्यादा lone pair है तो repulsion ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Why more bond pairs? That not very completely behind that one. आ गया next सवाल देविका. Give me the answer. इसमें से incorrect कौन सा है? So this is almost like 4 questions in one. But हम लोग eliminate जल्दी से कर सकते हैं. ये diametric नहीं हो सकता है because this has 16 minus 1 which is 15 electrons. Okay, so it cannot be diametric. It must be parametric. H2 plus is 1 electron. Absolutely. Because hydrogen में 1 electron होता है और H2 plus मतलब कि 2 minus 1 1 electron. ये वाला भी सही है. अब इन दोनों में से थोड़ा देखना पड़ेगा कौन सा आंसर है. Eliminate करो. C2 molecule has 4 electrons in its 2 degenerate orbitals. ये ज्यादा आसान लग रहा है फिगर आउट करने में. A में टाइम लग जाएगा, राइट? सो लेट्स लुक एट B. C2 molecule has 4 electrons in its 2 degenerate pi molecular orbitals. C2 मतलब कि 12 इलेक्ट्रॉन, राइट? 6 into 2. Okay, cool. Now it has sigma
1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2, that's 8 जो हो जाते हैं कैंसिल, बाकी बचे 4, those go into pi, 2px equal to pi 2py 2 hence ये वाला भी सही है, hence the answer is A. Is it A? D? Oh नहीं, incorrect निकालना था bro, then we already figured it out. I did the same thing you guys did. तो ये वाला भी सही है, तो पहला वाला incorrect हो गया ना, that's the answer. We don't have to spend time on this. सही है. Anyway, if you want to spend time on this, the way to figure out A, option A, and takes a little bit of time to do. और नीट में कभी भी ऐसा ना करना, ओके? डरावनी चीज भूल जाओ. Look at the other option, maybe you'll figure out the answer. This is one of those time sink questions जिसमें अगर आप options को ध्यान से नहीं देखोगे, you will waste a lot of time on this option and this option. But look at that, 10 seconds में you figured out that this is wrong. And I did, but I forgot about it. सवाल पूछ क्या रहा था? Anyway, how do you figure out this one? नाइट्रोजन में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, ओके? बॉन्ड ऑर्डर होता है 3. So you go +1 -1, yeah? If you go from 14 to 15 or to 13, दोनों का 2.5 होगा, ठीक है? और if you go to 16 or you go to 12, दोनों का 2 हो जाएगा, so on and so forth, right? And इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? This is 15, 16, 17 and 18. तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 1.5, इसका 2, इसका फिर से 2.5. या look at that, yeah, absolutely. ये भी सही है, बट करने की जरूरत नहीं, जल्दी से डी ही मार्क करना था. या ऑल राइट. और या रियली कूल डूड. आदिल, वेलकम, लॉन्ग टाइम. एक और फिजिकल का सवाल. If the radius of the second orbit of Li2 plus is x, then find the radius of the first orbit of He plus in terms of x. बताइए. Second orbit of Li2 plus is x. Find the radius of first orbit of He plus. थोड़ा सा एफर्ट लगेगा इसमें, but we can do it, I feel. How do we do it? Second orbit. We basically have to figure out R as a function of क्या क्या चीजें हैं? Z और N. ये क्या है? What is this? What is this function of Z और N? Okay, याद है क्या? याद है कि नहीं है? Velocity याद है? Velocity is Z by N. Energy is Z square by N square. Okay, cool. Radius क्या होगा? How do I do this? ये मुझे याद इसलिए because E is half mv square. तो जो velocity होगी उसकी squared will be energy. Radius is N square by Z. ये याद रखना जरूरी है. ये याद रखना बहुत जरूरी है. N square by Z. Okay, cool. 0.53 angstrom. All right, good job. Let's do that. So, अब क्या करें? Can you guys go and solve this? I'll give you an entire minute. Physical question थोड़ा time लगता है ना? We have a lot of time. 17 पूरे 17 मिनट है. We are at 1943. You have till 1944 to do this. उससे ज़्यादा time नहीं लगना चाहिए. I know some of that is past. Please solve. Please solve. Please solve. So, the only thing you need to make sure. आराम से करो. Obviously, fine. Let me write down one more thing for you. R2 मतलब second orbit का of Li2 plus is going to be proportional to 2 square by 3. This is x. Okay, some constant times this is x. That constant, as you guys have figured out, is 0.53 angstrom. Doesn't matter what the constant is. Because हमको ratio ही चाहिए ना. Take this to be x. Thank you, Piyush, Sultana and Shivam. Good job. R of 1 He plus मतलब कि 1 square by 2 is how much? Okay, cool. Cross multiply करो बस यही है ना? By cross multiplication, you get x by 2 is equal to 3. X by 2 divided by this, basically, x by 2 divided by 4 by 3 is what you've got to do. यही होगा आपका answer, which is 3x by 8. Good job, everybody. Next question. Yes, exactly. Thank you, everybody. The number of possible enantiomeric pairs that can be produced during monochlorination of 2-methyl butane. So, monochlorination हो रहा है एक प्रोडक्ट का, एक कंपाउंड का. एनांटियोमेरिक पेयर कब बनेंगे? जब कायरल कार्बन होगा. नॉन सुपरइम्पोजेबल, राइट? मिरर इमेजेस. सो कायरल कार्बन होना चाहिए, राइट? मे बी. सो जितने कायरल कार्बन उतने एनांटियोमेरिक पेयर्स. व्हाट डू यू थिंक? इज दैट लॉजिक फाइन? ये लॉजिक ठीक बैठ रहा है या फिर ये लॉजिक इज रैंडम?
अकॉर्डिंग टू यू समझ में आ रहा है तो बताओ, अदरवाइज आई एम हियर टू हेल्प. लेट्स ट्राई दिस. प्लीज ट्राई करिए. पहली बात है, हाउ व्हाट ऑन अर्थ इज 2-methyl butane. 2-methyl butane होती क्या चीज है? या let's write that here. 2-methyl butane is this right here. Okay, how do I do this? How do I draw this? पहले ब्यूटेन को ड्रॉ करो, फिर 2 यहां पे डालो, which is 2-methyl butane. Okay, so 1 2 3 and 4 2-methyl butane. Now start adding chlorines to this. You think it's C burger? Okay, one enantiomeric pair. Okay, ठीक है, cool. देखते हैं 1 2 3 या 4. Okay, what do you think? Yeah, absolutely 4 होगा. 4 मतलब 4 pairs होंगे या 4 होगा? अगर 4 हो गया तो 2 square होना चाहिए. So think about what you're saying. I am sure you have solved it and you got the answer right. But आप जो आंसर बोलना चाहते हो उसको ध्यान से मुझे आंसर दो, because that could give you like a +4 in NEET or give you a -1. Be careful. Please be careful. जरूरी है. Okay? क्या लग रहा है? सोच के बताओ. अभी वही लग रहा है? You want to change your answer, guys? बताइए. These are the 4 structures that I've got. Okay? Did I miss any structure? Are all of these structures legit या फिर कोई मैंने मिस कर दिया? एक मिस कर नहीं, एक्चुअली मिस नहीं है, सेम ही है. Whether I add Cl over here or Cl नहीं, chlorine, हाँ, Cl यहाँ पे या Cl यहाँ पे सेम ही है. Okay, so both of these are the same. So उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं. Okay, I could also no, this is fine. और कुछ बचा है क्या? मुझे तो और नहीं दिख रहा है. Do you see any other chlorinate, any other chlorine वाला product? 2 chiral. दूसरा कहां दिख रहा है? You stick to C burger. Okay. दूसरा कहां दिख रहा है? I see one chiral carbon over here. Where is the other chiral carbon? What do you think? दूसरा chiral carbon कहां है? ये तो chiral नहीं है, दोनों तरफ CH3 है. This is C2H5. Think about it. Where is the other chiral carbon? It's okay. I am not saying सही है गलत है. 2 chiral बहुत लोग बोल रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूं कि दूसरा chiral कहां है? Where is the second chiral carbon? Please help me with this. It's okay. I'm not saying you're right or you're wrong. That's not important. इधर भी हाइड्रोजन हो गया, इधर भी हाइड्रोजन हो गया. So this is तीसरे स्ट्रक्चर में. This one right here. Oh, lovely. Piyush, the eye of a hawk. ये हो गया chiral. Excellent work, Piyush. Brilliant. Yeah. Piyush is the only guy. Now Burger, देख पीयूष ने क्या बोला. देख, obvious वाला chiral ये है. This is the obvious chiral center, okay? Obvious chiral center. But this is the non-obvious, but still a chiral center. Yeah, you see that? Good work, Piyush and Teetraj. I like that they stuck to their guns. मैं जितना भी उन लोग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, they did not change their answer. So I like it. Good job. Yeah? Good job. Teetraj, Piyush, yeah. Sweet. बगर होता है यार, डोंट वरी अबाउट इट. मुश्किल सवाल था ये, थोड़ा देखना पड़ता है. ठीक है, मुश्किल इन द सेंस, सी द स्ट्रक्चर्स जो मैंने ड्रॉ किया, आपने भी ड्रॉ किया. इट्स जस्ट दैट we didn't account for this one. We didn't account for this being carbon, this being chiral. ठीक है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ C2H5 है, दूसरी तरफ CH2Cl है, तो ये chiral हो गया इसलिए. Good job on figuring it out. So you have 4 different enantiomers, and that means you have 2 pairs. Lovely.
इनमें से कौन सी ज्योमेट्री इज एक्सप्लेन्ड बाय द सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स? एंड यू गॉट 5 ऑफ दीज थिंग्स. लेट्स कैंसल दिस वन आउट बिकॉज ये तो नहीं हो सकता है. SCN इज SP. या SCN माइनस इज लाइक HCN. सिमिलर चीज ही है. H से replace H with S, and so that SP and nothing else here is SP. NH2 minus I feel is going to be SP3, right? NH2 minus is similar to NH4 plus, which is, I know, sounds like very weird to say, like what? Yeah, it is going to be weird, but it's still going to be SP3. Am I solving it for you? आप लोग solve करो, please. आप लोग solve करो. I went ahead. Yeah, burger. समझ गया? Okay, good. Piyush has figured it out. Yeah, exactly. Options देख के तुरंत figure out हो जाते हैं. Yeah, all right. Piyush, Nidhi, welcome, Nidhi. आप भी हैं सुल्ताना. Good job. To Chiral. Good job, Sultana. Yeah, absolutely. Yeah. The chat moves on so quickly. कभी-कभी we miss out on some names. Apologies about that. ठीक है? Okay, cool. Good one. So इसमें it's A is obvious. But NH2 minus का क्या होता है? NH2 minus, are you guys with me when I said sp3 hybridization होता है, or do you guys not agree with me? It's okay to not agree, but आपको क्या लगता है? What is NH2 minus का hybridization? Just पूछ रहा हूँ. क्या hybridization होगा उसका? आपके हिसाब से? और कैसे होगा? मतलब जो भी हो, just your opinion on this. Just your opinion. Yeah, okay, all right. SP3, ओके. टेस्ट में किया था, अच्छी बात है. टेस्ट में करो, कहीं पे भी करो, एज लॉन्ग एज डूइंग इट इट्स गुड. ओके, कूल, गुड जॉब. ठीक है, तो ये दोनों तो SP3 है, NH2 माइनस एंड NH4 प्लस. बट सैडली ऑप्शन में ये दोनों नहीं है. ऑल्दो यू गॉट दैट, इट्स राइट, दोनों ऑप्शन में नहीं है. सो लेट्स लुक एट SCN माइनस. वो तो SP है, हटा दो. दीज बोथ SP3. दिस इज द ओनली वन दैट मेक्स सेंस. A is the answer. 8 minutes. How many questions do you think we can do in this? What is the best method for carrying out this reaction? हम लोग ले रहे हैं बेंजीन को COH and NO2. Looks like ये तो मेटा एडिशन है. तो either I somehow add COH after I add nitro. That's a little hard to do. Or let me make COH first and then I'll add NO2. Yeah, that makes more sense. Right? CHCl3, AlCl3. You started arguing saying कि bro, ये क्या बोल दिया? टॉलुइन तो बनता है. तुमने बोला था कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन काम नहीं करता है. यार, दैट वाज अ जनरल स्टेटमेंट. डोंट बीट मी डाउन फॉर इट. 2 सिग्मा व्हाट? ओके, पिछले वाले की बात कर रहे थे. गुड जॉब. सी, एवरीवन सेज सी. ओके, ऑप्शन ए मेक्स नो सेंस. आई फील कुछ मिस टाइप हो गया. -CO2, आई फील कि दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक मे बी. आई डोंट नो ये क्या हो रहा है. फर्स्ट स्टेप फ्रीडल क्राफ्ट. ओके, ग्रेट. सेकंड स्टेप, नो, that's not going to work. That's going to mess up everything. Okay, to see that this, if I do this in the end, it'll give me just this. It'll remove everything else. ठीक है, we don't want that. पहले नाइट्रो किया, फिर now this is also not going to work. It's going to remove the nitro. So first पहले alkane बनाओ, पहले toluene को बनाओ acid, and then go ahead and nitrating mixture. Yes, C is the right answer. Good job everybody. Good night Nabi ji. What? It's 8 o'clock bro. ती जल्दी कौन सोता है? Product of the following reaction is what? You've got, dilute NaOH and heat. What does this do? Piyush, that was alkylation in general. It was not forming toluene. कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है. I showed you कैसे नहीं होता है. You have understood the reason and you want that question to be right. You have to realize कि तुमको attach नहीं होना चाहिए question से. I have given you the logic. You have also accepted the logic. But you're still like, no, I was right. क्यों भाई? I have proven to you how that question was wrong. I mean, the assertion was right. Don't get attached to the question. We've gone through it for 5 whole minutes. I don't think it warrants any more time. यहाँ पे हो क्या रहा है? Could this be alpha hydrogen की acidity? Eno. Aldol condensation. Yes, Nidhi and Pampa. All right. Cool. Thanks, Shivam. All right. All right, Nabi.
Yeah, what is aldol? Not B. Why is he saying not B, bro? B तो सही है. Why burger? B is the right answer, dude. I haven't shown you C and D, but here you go, C and D. What is? Oh, not B. Yeah, okay, cool. Not B. Yeah, not B. Not B. सही है. Not B. Not B. मुझे लग रहा था ये तो D is the answer, guys. I've given you the hint. That's the right answer. देखो यार, there is no acidic hydrogen over here. What are you going to do? No hydrogen. Forget acidic. Hydrogen है ही नहीं यहाँ पे. So यहीं से hydrogen को निकलना पड़ेगा. This hydrogen has to get abstracted, giving you a nice negative charge. This negative charge attacks here. That's it. Khatam. And hence you get this product, but with CH3, not with CHO. Why will another CHO come? Double bond will get formed between this species and this right here. Okay. And baki to as it is. Yeah, aldehyde remains as it is and it is formed. No, hydrogen hai nahi, exactly. Yeah, burger, you're right. पानी निकल जाता है. Thanks for reminding me. Stay hydrated, folks. गर्मी काफी चल रही है पूरे भारत में. D is right. All right. Good job, everybody. Do we have time? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं. Let's do one last question. नहीं सुल्तान, और ऑप्शन से जिस जगह थोड़ी कम थी इसलिए वहां पे दिखा नहीं पाए. लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं. ये है 2017 नीट का सवाल. लास्ट क्वेश्चन, लास्ट फॉर द डे. आज बारिश हुई है. वाह तीर्थराज, कैलकाटा में बारिश हुई. लवली यार. बैंगलोर में तो हम लोग सूखा पड़ा है बिल्कुल. Concentration of Ag plus ions in a saturated solution of Ag2C2O4 is 2.2 into 10 power minus 4 mole per liter. Solubility product क्या होता है Ag2C2O4? Ag2C2O4 मतलब ऑक्सिलेट है ना, सिल्वर ऑक्सिलेट. या निधि, सॉरी अबाउट दैट. Oh man, that sucks, Sitraj. Let's try this. Take a minute to try it. अगर आप नहीं कर पाते, I'm here to solve this. This is one of those डायरेक्ट थिंग्स. यू जस्ट हैव टू राइट कि Ag2C2O4 किस टाइप के आयॉन्स देता है. हिंट देता हूं. इट विल गिव यू Ag plus and C2O4 2 minus. But since it's giving you Ag plus, it will give you two of those. 2 Ag plus C2O4 2 minus. So बस लिख लो उसको. And so it becomes, अगर मैं डालूं S moles of Ag2C2O4, then I will get 2S moles of Ag plus and I will get S moles of C2O4 2 minus. So I do 2S whole squared times S be equal to KSP. मैंने पूरा सवाल तो वर्बली सॉल्व कर ही दिया. अब आपको करना क्या है, आंसर बताइए. वाह, दैट्स ग्रेट. गुड टू हियर सुल्ताना. 4S cube says Piyush. Lovely. 4S cube is good, but you can't take a hammer to this question because S is not given directly. S is given indirectly in this question. Good job on that, Piyush. But are you sure? Sultana, are you sure? Snigdha, are you sure? Nigam, are you sure? इतने लोगों से are you sure पूछना मतलब कुछ तो गड़बड़ होगा, है ना? अरे यार, मैंने इतनी ऑडियो बुक की तरह कहानी सुनाई आप लोगों को, सुन लिया करो ना. ये सब कहानी बोलने के बाद what value has been given to you? This is not S, this is 2S. Okay, so S is this value. Okay? Yes? No? Maybe? हाँ या ना? सोच के बताओ. अब बताओ आंसर क्या होगा. With this in mind, what will the answer be? Let me try what you guys did. I know what you guys did. 4 into S cube मतलब 2.2 क्यूब कर दिया आपने. मतलब 4 into 8. 4 into 2.2 क्यूब 10 हो जाएगा. नहीं 10 नहीं होगा. 10 हो जाएगा ना. 10 से ज्यादा हो जाएगा. कैलकुलेटर लेता हूं मैं because I am lazy. 10 हो गया. 10.6 हो गया. बढ़िया. देखो, I know what you guys did. 10.6 into 4. 4.3. I know what you guys did. I know what you guys did. भाई इसलिए मैं कहानी बोल रहा था. Why do you think I was dictating to you? जल्दी में मत करो चीजें. What has been given to you in the question is 2S. Okay, the S value is this. After this, doing stuff is easy. तो लिख लो, इसको as it is square करो, इसको ये करो. This 4S cube business is useless in this question, as you can see. Okay? Or if you want to do 4S cube, then you get what S is, जो मैंने पहले स्टेप पे यहां किया है.
1.1 cube into 4 into 10 power minus 12. The only answer that makes sense is 10 power minus 12 रहेगा as it is 1.1 मतलब 121 हो जाएगा, फिर 1331 हो जाएगा, आई थिंक ऐसा कुछ था ना, मतलब into 11 इतना होगा ना, 121 और 121 1331 वो होता है ना स्क्वायर टेबल, whatever. I'm not that good at this. Shared something is पता नहीं, I won't try it. There's a table you can form ना 11 का square cube का and all of that. Figure that out. खैर, the answer is option C. Okay? अरे पीयूष 12 होगा ना, 11 क्यों जाएगा? 12 ही रहेगा, 12 रहेगा ना. देखो, if you want to do 4s cube, s value is 1.1 and 10 power minus 4. Okay? Yes, तीसरा बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर टाइम. एज ऑलवेज मजा आ रहा है मुझे आप लोग साथ ये सब सेशंस करने में, एंड ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट किस बात का, हम लोग मिलेंगे थर्सडे को, तब फिर से बोलूंगा ऑल द बेस्ट. या पास्कल ट्रायंगल, ऑलराइट बर्गर जी, पास्कल ट्रायंगल. सो यू सी व्हाई आई एम मिक्सिंग अप थिंग्स, राइट? इन माय सेशंस आई एम डूइंग फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक साथ में, बिकॉज नीट के एग्जाम में यही आने वाला है. इट्स नॉट गोइंग टू बी कि आपको सिर्फ एक चैप्टर से एक सेशन क्वेश्चन आएगा ना, इसलिए मैं सारे मिक्स करके आपको दे रहा हूं, ताकि कुछ क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाए, कुछ क्वेश्चन आपको बताएं कि ध्यान से पढ़ना है भाई, ठीक है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है. थ्योरी तो आप सब पढ़ चुके हैं, यू आर ऑल वंडरफुल स्टूडेंट्स. यू हैव टू रीड क्वेश्चंस केयरफुली, दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी. ठीक है, चलिए थर्सडे को मिलते हैं. विल कंटिन्यू, विल डू द लास्ट सच सेशन दैट विल बी अ लिटिल बिट मोर हेवी ऑन 12th grade फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक एंड ऑल ऑफ दैट. इनऑर्गेनिक, सॉरी. ओके, सी यू ऑल, हैव एन ऑसम इवनिंग. मैं चलता हूं जे एडवांस का सेशन लेने 8:30 बजे. ऑलराइट, मिलते हैं फिर थर्सडे को. गुड नाइट. आई विल सेंड यू नोट्स एज यूजुअल ऑन टेलीग्राम. बाय. एडमिट कार्ड कब आएगा? गुड पॉइंट. वेट, निधि अभी तक नहीं आया? दैट्स क्रेजी. कल नहीं सीखता, आई विल बी हियर ऑन थर्सडे सेम टाइम 7 o'clock. टुमारो नहीं. यस यस बर्गर, एक और है, वन मोर सेशन 7 o'clock. आई विल मेक द थिंग, बना दूंगा मैं, और यू विल सी इट. नेक्स्ट वन ऑन थर्सडे एट 7 o'clock. बाय, सी यू. एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं, दैट इज इनसेन ब्रो. आना तो चाहिए, जल्दी आना चाहिए. आई होप जल्दी आ जाए, मे बी आज रात को आ जाए, हू नोस, सिंस आपने मांगा. बाय.